Yes, we discussed about the RMS value of current and voltage in the last session, and we derived the power equation in terms of its RMS value. So we have established the equation for average power, 1 half of V m I m cos of theta V minus theta I. Fine, we have established the value of the equation for average power in terms of RMS value simply as VRMS into IRMS cos of uh, theta V minus theta I. Fine. So this is the the equations for average power in terms of its maximum value as well as in terms of the RMS value of voltage and current. Now instead of writing theta V minus theta I, what I will be doing is I'll be writing simply phi, where phi will represent theta V minus theta I, that is the phase difference between voltage and current. Rather than knowing the individual phases of voltage and current, we can obtain the phase difference between voltage and current. That is phi. That's actually more useful to us because that will convey us all the information that we need. If phi is equal to 0, we can understand that this is a resistive circuit. If phi is equal to 90 degrees, we can understand that it is a reactive circuit. Now, whether it's plus minus 90, it can be a capacitive or an inductive circuit accordingly. Uh, so we'll be discussing some important terms about power today. Uh, Now, from this equation that we have already derived, that is P average equal to V RMS into I RMS. Also, remember we have derived this equation for average power. P average is equal to 1 half of V into I conjugate. Fine, where V and I are in phasor form. So I'm writing the same equation. P average is equal to V RMS into I RMS cos of uh, theta V minus theta I. Instead of writing theta V minus theta I will simply be writing now cos of phi. So P average is equal to VRMS, IRMS cos of phi, where this VRMS into IRMS can be represented by a symbol S. Fine. S is equal to VRMS into IRMS is known as the apparent power. Fine. This power term that, and this is actually also a power term because voltage into current gives power to us. So S is an apparent power, and why it is called apparent power? It is because in a DC circuit we understand that power is given as a product of voltage and current. So apparently for an AC circuit also the product of voltage and current should give us the power. It is not the actual power in an AC circuit, but it's only the apparent power that seems to us it should be the power in this particular circuit. Fine. So that's why it's known as the apparent power. S is equal to VRMS into IRMS, and the units for S is VA, that's actually volt amperes. Fine. Uh, P average is equal to VRMS, IRMS cos of phi. The units for this is of average power is watts, but units of apparent power is not watts, it's volt amperes, VA. Fine. You can also have kilovolt amperes, KVA. Fine. So most of your household, you may have come across this term, ये कितने KVA, ये कितने KVA. So what we are actually talking about when we are discussing KVA, we are actually talking about the apparent power. What is apparently the power of this particular product or particular device? Sir, what's it using current power? Hmm? Use current power. What is? What is the use of apparent power? Sir? If it's apparent, then why we are finding? Yes, we will be discussing that. Okay.
Fine. So average power को हमने established की equation VRMS IRMS cos of phi. S we have discussed is from this we have actually taken one portion, that is VRMS into IRMS, and I have said that this is known as the apparent power. The cos phi here is known as the power factor. Fine. So if we actually replace PRMS IRMS by S, P average is equal to S into cos of phi. Fine. Then cos of phi is given as P average divided by S. ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये जो एवरेज एवरेज लिख रहा हूँ हर जगह पे, मैं इसको आप ड्रॉप कर दूंगा. यू कैन अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज पावर. तो कॉस ऑफ phi इज इक्वल टू P divided by S, the average power divided by the apparent power. So now what does this inform, what does this actually inform us, what does, and it's actually known as power factor. ठीक है, so what does this tell us? Cos phi is actually now a ratio of what? The average power to the apparent power. This average power is also known as it is, ये जो P हमने लिखा, we have actually said this is average power. It is also known as true power. Now why it is true power? This is actually the actual amount of power that is being delivered or that is being consumed is the average power. So that's why it's known as the true power. It is also known as real power. Now cos phi, therefore, the power factor is the ratio of true power to the apparent power. Cos phi is the ratio of cos phi, or what actually is known as power factor. Therefore, power factor is actually nothing but the ratio of the true power to the apparent power. So it actually conveys us what is the actual amount of power that is being delivered to the load. Fine. So apparent power is actually what should have been produced, what actually is produced by the system. ठीक है, जो actually आपका power generation होता है, that will be VRMS into IRMS, that can be calculated by that equation. But then not that amount of power is being consumed by the load. Now why that amount of power is not being consumed by the load? Because of the phase difference that is produced between voltage and current. अब ये जो phase difference आ रही है यहाँ पे, what causes that phase difference is the reactive nature of many elements that are actually connected between your source and your load. Fine. From your source side to your load, the source actually itself will be having some reactive element. The transmission line will be having some reactive element. The load will be having some reactive element. By reactive element, I mean it can be having some form of inductance. It can be having capacitance. Because of that reactance, there is a phase difference between voltage and current. If there were no reactance, the phase difference between voltage and current would be zero. That means cos phi at that time, cos phi can also be from here, since we know what is phi, it is theta v minus theta I. So cos phi can also be written as cos of theta v minus theta I. So it is actually the cosine of the phase, cosine of the difference of phase of voltage and phase of your current. Now voltage and current में कब difference आ जाती है? When does the phase difference occur between a voltage and a current? Only when there is a reactive element present in your system. If there is no reactive element present in your system, there will be no phase difference between the voltage and current. They will be both in phase. If for example we have a purely resistive circuit, the phase difference between voltage and current will be zero. Theta v minus theta I will be zero, or you can say simply now phi is equal to zero for a purely resistive circuit. If you have a purely resistive circuit, phase difference is zero. Cos of phi, that is cos of zero,
will be equal to 1. At that time, your this power factor ratio, that is cos 0 divided is equal to P by S, implies P by S is equal to 1, implies P is equal to S. So apparent power at that time and the real power at that time, that is actually the true power at that time, will be equal. So whatever is actually apparent to us, that this should be the power that should be visible at the load, that much amount of power is actually being consumed by the load. Fine. But what happens in real circuits, in actual practicality, what happens is there is always some reactance present in the system. There is always some form of inductance or capacitance present in the system. So theta V minus theta I will not be equal to 0. Fine. So phi, since phi is not equal to 0, cos of phi will always be less than 1. Okay? It will be varying between 0 and 1 depending upon how much reactance is present in the system. So if cos of phi is less than 1, P by S is equal to cos of phi, that means actually it is less than 1, implies P is always less than the apparent power. So your true power is always less than the apparent power in the system. Uh, so true power is the actual power that has been consumed by the load. Apparent power is actually the power that should have been consumed by the load, but it is not being consumed by the load. तो ये जो डिफरेंस अब आ रही है आपके इस सिस्टम में, जो ये apparent power और real power के बीच में जो डिफरेंस आ रही है, that is actually because of the reactive element present in the system. और ये जो डिफरेंस है वो मेजर कैसे हम कर सकते हैं, हाउ कैन वी क्वांटिफाई दैट, बाय द पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर एक्चुअली क्वांटिफाइज आवर सिस्टम. हमारा सिस्टम कितना केपेबल है, कितना एफिशिएंट है, डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर. इफ पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1, real power and apparent power are equal, that means what should have been generated is being consumed. But because of the presence of reactance, power factor is never, it is not equal to 1, it is always less than 1. Not always, but most of the times it is less than 1. And because of that, what happens is our real power is always less than the apparent power. So what power should have been consumed is not being consumed. Only some portion of that power is being consumed. That portion of the power that is being consumed is known as the true power or the real power. So which factor helps us in determining what amount of power is being consumed? It is the power factor. So power factor actually quantifies your system. It actually gives a quality check about how efficient your system is. So you may have heard about power factor based meters. बहुत सारे जगहों पे use होते हैं, and in many cases, some places still power factor based meters are not being used. अब power factor based meters आपके घरों पे क्यों install होते हैं? Because they actually want to see how much amount of reactive load you are applying to the system and how much amount of power, uh, what is the amount of power you are consuming. Fine. So if you are consuming 200 watts of energy, that is the real power that you are consuming. Because but since there is some reactance present in your system, S will always be greater than 200 watts. So apparent power that is being, actually what they have to generate is equal to S. So they have to actually generate some 300 VAs of power so as to supply, so as to meet your demand of 200 watts. ठीक है, आपके घर पे जो डिमांड है that is 200 watts. This is which power? This is the real power. Fine. P. Your demand is 200 watts. This is the real power that you're actually demanding from the system. But because of the reactance present in different elements in your household, आपके घरों में जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्टिव हीटर्स लगे हुए हैं, इंडक्शन बेस्ड कुकर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइस कुकर्स एक्स्ट्रा.
उनकी वजह से इंडक्टेंस प्रोड्यूस, उनकी वजह से रिएक्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट what the company has to provide is S, that is the apparent power. They have to generate the apparent power. They cannot generate the real power for you. They have to generate the apparent power because they have to meet both your real power demand as well as the reactive power demand. Reactive power अभी मैंने define नहीं किया, वो भी अभी मैं define कर लूँगा. But you have understood that this apparent power is always greater than P and it depends upon the cos phi, that is the power factor in your of your system. Power factor जितना जितना कम होगा from unity, if cos phi is equal to 1, that means your load is resistive. But if your cos phi is moving towards 0, that means your load is more and more reactive in nature. So to meet that, your company has to, your power provider has to actually supply you with more and more S, that is the apparent power. ठीक है, so that's why they actually install power factor meters so that you are able to lower your reactive power demands, or you can say reactance in the system, so that your cost factor, that is your power factor, moves towards unity. And because of that, the company has to provide only for your real power demands. That's if you are demanding 200 watts, they will give you only 200 watts. ठीक है, if you are if you are say for example, if your cost if your reactive element is actually all of the reactance in your system is actually equal to 0, ठीक है. But कुछ थोड़ी बहुत reactance होती है हर किसी system में. It is not possible to have zero reactance in a system, and there is some amount of uh, flexibility that your company provides you. जो भी आपके पावर सप्लाई प्रोवाइडर्स हैं, say for example between 0.8 to 0.95, they may allow you this much amount of leverage, जो आप इतनी रिएक्टेंस अपने सिस्टम में रख सकते हो ताकि वो ताकि जो उन पे लोड है that decreases. They have to supply you with the apparent power. They do not have to supply you with the real power. तो अभी तक हमने खाली रियल पावर डिफाइन किया. अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन द एपरेंट पावर एंड द रियल पावर, दैट्स यस. सर तो जो सर्किट्स होते हैं जिनमें बस रेजिस्टर्स होते हैं तो उनमें कैसे रिएक्टेंस आ जाती है उन सिस्टम्स में? जो आपका प्योरली रेजिस्टिव सिस्टम है उसमें तो कोई रिएक्टेंस नहीं होगी, बट आपके तो आपने बोला ना इन रियलिटी यस पर रिएक्टेंस होती है. हाँ, इन रियलिटी रिएक्टेंस होती है. व्हाई? बिकॉज योर लोड्स आर मोस्टली दे आर रिएक्टिव. देयर आर एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंस इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम, ठीक है. से फॉर एग्जांपल आपके घर में फैन लगा हुआ है, उसमें मोटर है, उसमें इंडक्टेंस लगी हुई है. आपके घर में ये जो स्मॉल अमाउंट्स, ये जो चार्जर्स हैं, मोबाइल फोन से अडेप्टर्स हैं, इन सब में रिएक्टेंस, इन सब में इंडक्टर्स कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके घर में, उन सब में छोटी छोटी इंडक्टेंस, छोटी छोटी कैपेसिटेंस लगी हुई होती है. आपके घर में जितने भी मोटर्स हैं, ऑल ऑफ द मोटर्स हैव इंडक्टेंसेस. फाइन. मोटर्स आपके घर में वॉशिंग मशीन में है, फैंस में है, ठीक है. आपका जो टीवी अगेन इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसमें भी रिएक्टेंस है. जो आपका प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट जो आपका है, ऑलमोस्ट यू कैन से 100% रेजिस्टिव एलिमेंट जो आपके घर में है, उसमें से आपकी वो पुरानी जो बल्ब होती थी वो प्योरली रेजिस्टिव होती है. जो आपके पुराने घर, जो पुराने टाइप्स ऑफ हीटर्स होते थे, वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स होते थे. बाकी जो आजकल सारे एलिमेंट्स आते हैं उनमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंस तो होती ही है, ठीक है. आपके घर में आजकल इंडक्शन बेस्ड हीटर्स आ गए हैं, इंडक्शन बेस्ड कुकर्स आ गए हैं, ठीक है. आपके घर में से फॉर एग्जांपल एसीज वगैरह सब में इंडक्टेंसेस कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ लगा ही है, ठीक है. देर आर ऑलमोस्ट यू कैन से आजकल 5 या 10% ऐसी चीज़ें होंगी जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स हैं. बाकी ऑलमोस्ट 95% ऑफ द एलिमेंट्स आर हैविंग some sort of reactance, ठीक. Almost all power electronic gadgets, they are having some sort of reactance. Fine. So actually this power factor correction is an important topic in your power systems. How to actually correct this, how to actually
योर कॉस्ट फाई इज एक्चुअली डिक्रीजिंग डे बाय डे. जितनी जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, योर पावर फैक्टर इज एक्चुअली decreasing, but you do not want your power factor to decrease. It should be held at unity. तो उसके लिए भी पावर फैक्टर करेक्शन में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, एंड वी आर एबल टू compensate for that power factor डिमांड. पावर फैक्टर जो करेक्शन है, वी आर एबल टू कंपनसेट फॉर दैट. उसके लिए डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं. दैट यू विल बी स्टडिंग इन योर बाकी जो कोर्सेज हैं आपके आने वाले, उसमें आप ये पावर क्वालिटी इशू, इसमें सबसे बड़ा इशू पावर फैक्टर करेक्शन का ही है. दैट यू विल बी टेकिंग अप इन योर पावर सिस्टम्स कोर्स. So I was actually I had written this term, the complex power term. तो मैंने एक तो आपको डिफाइन किया S, that is the apparent power, and I have defined you a term P. Instead of calling now it average power or true power, we'll be calling it from here on the real power. S is measured in terms of VA, volt ampere, and real power is measured in terms of watts. Now there is reactance present in your system that actually causes reactive power. So हम कैसे भी derive करते हैं? We have defined this equation for phasors. This was the equation for average power in terms of phasor quantity, 1 half of VI conjugate. As say, if we transform this into phasor form but also in terms of RMS value, तो 1 half आपका cancel out हो जाएगा. So you are left with VRMS into IRMS conjugate. Fine. Cos of, अच्छा cos तो phasor में ही है. आवाज क्लियर नहीं आ रही. यस. आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही. You can जो भी, if you have any question you can put it up in the chat. हाँ, यस बोलो. आ रही है अब आवाज. अब आवाज आ रही है. हाँ, ये अब एक कन्वेंशन है, क्योंकि जब हम वॉट्स की बात करेंगे विल बी अंडरस्टैंडिंग ये रियल पावर है. अगर हम कभी बोलेंगे 20 वॉट्स तो हम समझेंगे कि ये रियल पावर है. अब मुझे अगर से फॉर एग्जांपल अपेरेंट पावर बोलना होगा तो मैं उस टाइम पे भी 20 वॉट्स बोलूँगा, तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि ये अपेरेंट पावर है कि रियल पावर है. तो वी हैव एक्चुअली डिस्टिंग्विश्ड, वी हैव केप्ट डिफरेंट यूनिट्स सो दैट वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा अपेरेंट पावर है, कौन सा रियल पावर है. बाकी है तो ये एक ही चीज़. हाँ. So now in terms of phasors, we have defined the average power as 1 half of VI conjugate, or in terms of RMS value, we can RMS plus being the phasor also, VRMS into IRMS conjugate. So these are phasors. So that means VRMS has its own angle theta V, IRMS has its own angle theta I. ठीक है, ये कंजुगेट तो मैं ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे, ये माइनस थीटा आई हो गया. और यू कैन से वी आर एम एस आई आर एम एस एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई, जो कि एक्चुअली you already know. Fine. So P is equal to this, not PS. S is equal to VRMS IRMS conjugate. S is equal to this. S is equal to this. S is equal to VRMS IRMS angle theta V minus theta I. दिस एक्चुअली आर एंगल थीटा, मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देता हूँ. वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई की जगह, जैसे मैंने बताया, आई विल बी यूजिंग फाई.
प्लस जे VRMS IRMS sin phi, ठीक है। तो ये वही इक्वेशन है, बट अब मैंने instead of representing it in the polar form r angle theta, I'm representing it in the complex form. तो इसमें से तो हमें ये पता है ऑलरेडी, VRMS IRMS cos of phi, we already know this is our real power P plus VRMS IRMS sin of phi. We'll be writing it as a new term that I will be introducing. इसको हम denote करते हैं by Q. So S is equal to P plus JQ. That means apparent power is actually a complex power, and it is the summation of not summation, it is actually a complex number. इसमें इसका जो real part है, real part is the real power, ठीक है। यहाँ पे मैं ये P के साथ real of this thing, fine, हमने निकाला था। S is equal to S is the apparent power, P is the real power, the J plus JQ, Q is the reactive power, fine. So we can also plot this on the complex plane. So अगर ये आपका complex plane है, so P represents your real power, Q represents your reactive power. So S is this point, S is the sum. S is actually representing your P plus JQ point on the complex plane. Fine. So the magnitude of this S is what? Under root of P square plus Q square. S is a complex number, so its magnitude can be given by under root of P square plus Q square. And if we want to find out the phase, that is the angle of this particular quantity, it will be given by tan inverse of Q divided by P. तो ये जो आपका एंगल है यहाँ पे, ये tan inverse of Q divided by P है. This is known as the power triangle. So what does power triangle show us? It's actually a plot of a number S, that is a complex number, that's actually equal to P plus JQ in the complex plane, where the real part of this S is the quantity P and the imaginary part of this power is the quantity Q. Fine. That real part is actually known as real power only, and the imaginary part is known as the reactive power. So real power जो है ये actual power है अब, fine, ये actually true power है जो आपको actually दिखेगा, but ये जो Q है reactive power, ये imaginary term है, that means ये आपको actually नहीं दिखेगी, that means it is not actually being utilized anywhere in the system. Only the real power is being utilized in the system and it is useful to us. Fine. जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपके सिस्टम में, से फॉर एग्जांपल बल्ब के ग्लो होने में या फैन के चलने में या हीटर के इट प्रोवाइड्स यू हीट, फाइन, वो कहाँ से आ रहा है, वो पावर और एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके रियल पावर से। बट ये जो आपका रिएक्टिव पावर है ये आपका इमेजिनरी पावर है, ये आपके सिस्टम में तो है but it is not being used anywhere. Now what does that mean? Where does then this power go in the system? Fine. This power actually oscillates between the source and load. Fine. सोर्स तो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, लोड वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये इसको वापस भेज रहा है बैक टू द सोर्स. So it actually keeps on oscillating between the source and the load. It does not get utilized in the system, it only keeps oscillating. There is only an exchange of power between the source and the load. That exchange of power, that continuous exchange of power, or that oscillation of power between the source and the load is the reactive power in your system.
Now S here is a vector quantity. Sir, can we find this? Sir, can we find this reactive power? Yes, we can find the reactive power of a system. S अब आपका कॉम्प्लेक्स पावर है. इट इज S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू. P अब आपका रियल पार्ट है, Q आपका एपरेंट, Q आपका इमेजिनरी पार्ट है. मैं बता दूंगा. S इज इक्वल टू एपरेंट पावर, इसका जो यूनिट्स है VA है. P के जो यूनिट्स है वो वॉट्स है. Q के जो अब यूनिट्स है इट इज VAR. ठीक है. You can have now VAR or kilo VAR or mega VAR, kVAR, MVAR. फाइन. जैसे किलो वाट्स हो सकते हैं, मेगा वाट्स हो सकते हैं, ऐसे आपके अपरेंट पावर के भी KVA, के MVA यूनिट्स हो सकते हैं. बट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री पावर्स वी हैव थ्री डिफरेंट यूनिट्स नाउ, सो डैट हमें पता चले कि कौन सा रियल पावर है, कौन सा रिएक्टिव पावर है, कौन से आपके सिस्टम में अपरेंट पावर है. And from the power triangle, this is your vector P, this is your vector Q, this represents your vector S, that is the apparent power in the system. So apparent power वो power है जो आपके system को actually supply करना है. This is the actual amount of power that your power system has to generate. ठीक है. Now which why it has to generate it? It has to actually meet both the real power demand as well as the reactive power demand. अब ये reactive power demand कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है? ये आपके सिस्टम में जो इंडक्टेंसेस है, कैपेसिटेंसेस है, वो कॉन्स्टेंटली चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं. तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर है बिटवीन सोर्स एंड योर रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द सिस्टम, दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूसली हैपनिंग. आपके सिस्टम में कंटिन्यूसली एक पावर फ्लो हो रहा है, दैट इज exchanging between the source and the load, that is the reactive power. वो इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स दोनों reactive powers draw करते हैं in the system, and once they absorb that power they actually then release it back. ठीक है. होता क्या है आपके सिस्टम में? आपके सिस्टम में वोल्टेज और करंट ऑल्टरनेटिंग है. वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट वोल्टेज भी पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, करंट भी वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है. से फॉर एग्जांपल विल टेक द केस ऑफ इंडक्टर. तो जब तक करंट पॉजिटिव है, इंडक्टर तब तक चार्ज हो रहा है. ठीक है. इट कंज्यूम्स द कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है इंडक्टर? 1/2 ऑफ Li². बट जब आपकी करंट नेगेटिव हो जाती है सिस्टम में, आपका जो एनर्जी है दैट आल्सो बिकम्स नेगेटिव. so it that means what happens now to the inductor? It starts releasing energy. And how much energy it will release? It will release the same amount of energy, that is 1/2 of Li². वो पहले half of the positive half of the current cycle में एनर्जी को खींच लेता है, और नेक्स्ट हाफ ऑफ द करंट साइकिल जब करंट आपकी नेगेटिव है उस टाइम पे करंट को वापस भेज देता है सोर्स की तरफ. ऐसे ही वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी है दैट इज 1/2 ऑफ CV², वो एक हाफ ऑफ द साइकिल में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फॉर द नेक्स्ट इट चार्ज, फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल इट डिस्चार्ज. so this both inductor and capacitors start drawing the energy from the source depending upon the value of this inductor now. ठीक है. 1/2 of Li². L जो यहाँ पे कितनी इंडक्टेंस आपके सिस्टम है उस हिसाब से उतनी एनर्जी चूस लेगा, and then in the next half cycle it will release that amount of energy. So this inductor or capacitor presence in the system will draw more power from the system. और वो पावर कैसे कंपनसेट होगा? फ्रॉम योर जनरेटिंग एंड. आपके जो जनरेशन एंड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपरेंट पावर बनाना पड़ेगा. ठीक है. इसलिए आपके सिस्टम पे ज़्यादा लोड पड़ता है. तो वो दैट्स वाई पावर कंपनीज आस्क यू टू null to compensate for your reactive power demand locally. अपने हिसाब से अपने घर पे कुछ ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दो ताकि आपका जो रिएक्टिव पावर डिमांड है, ये जो इंडक्टर्स कैपेसिटर्स पावर को चूस रहे हैं, दैट यू आर एबल टू सप्लाई लोकली. वो पावर कंपनी पे वो लोड ना पड़े. ठीक है. तो उसके लिए भी आप पावर फैक्टर करेक्शंस कैसे करोगे आप सीख लोगे धीरे धीरे.
So that's why apparent power is important to you. That is, we actually need to know what is the actual amount of power that we need to generate depending upon what is the load scenario. जो हमारे या फिर लोड सिनारियो कितना पावर फैक्टर है उसी हिसाब से खाली जो यूजफुल पावर है दैट इज रियल पावर इन द सिस्टम दैट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ पावर दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू योर वट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग और वो कंज्यूम कर रहा है बाकी जो रिएक्टिव पावर है depending upon both the value of L and depending upon the value of C ये खाली exchange हो रहा है between source and load. It is not getting consumed anywhere. It is only getting exchanged between your source and the reactive elements in your system. ठीक है तो इसको कम करने के लिए या तो आप reactive elements को कम use करो fine and or you have other such ways of compensating for it. तो we can actually look at some we can look at basic जो एक कंसेप्ट है टू डिक्रीज रिएक्टिव पावर वो भी हम देख लेंगे तो यहाँ पे इसलिए अपरेंट पावर आपको चाहिए आपको अपरेंट पावर का knowledge is important so that you are able to actually identify how much amount of power is actually required to be generated ठीक है तो यहाँ से ये जो आपका पावर ट्रायंगल है यू कैन ऑल्सो if say for example this is phi P is equal to S cos phi fine and Q is equal to S sin phi ठीक है you can also calculate you can calculate both the values of real power and reactive power from this power triangle using these two equations or you can also calculate real and reactive power from these two formulas Vi cos phi ये दोनों RMS values हैं and Q is equal to VRMS IRMS sin phi ठीक है तो अगर आपको VRMS भी पता है सिस्टम का IRMS भी पता है phi भी पता है you can calculate both real power as well as the reactive power in your system so directly you can also calculate the value of Q from impedance also say for example आपका जो भी circuit है we already know Z is equal to VRMS divided by IRMS so P can be written as IRMS square Z cos phi or and Q can be written as IRMS square Z sin phi or V square by Z cos phi V square by Z sin phi. So these are different formulas for real power and reactive power in your system and once you know real power as well as reactive power you can also calculate the apparent power in the system. For a purely resistive load phi is equal to 0 cos phi is equal to 1 sin phi is equal to 0 so P will be equal to VRMS IRMS into cos phi that is 1 fine तो real power तो इतना होगा reactive power will be equal to VRMS into IRMS into sin phi that is sin 0 that is 0 तो ये 0 होगा इस टाइम पे so this will be these many watts this will be these many hours fine और S उस टाइम पे कितना होगा S डायरेक्टली P plus J Q तो एक्चुअली 0 है यहाँ पे खाली P के बराबर होगा this is for a purely resistive load for a purely say for example we take an inductive load phi is equal to 90 degrees fine तो P कितना हो गया आपका cos phi that is cos 90 is equal to 0 sin phi sin 90 is equal to 1
सो पी तो आपका जीरो हो गया, यहाँ पे 0 वॉट्स। तो हमने एक्चुअली ये डिफाइन किया था वहाँ पे वॉटलेस पावर, इंडक्टिव लोड इज अ वॉटलेस पावर। बट क्यों कितना होगा, ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा, these many VARs into sin phi, that is sin 90 is equal to 1 here. तो apparent power उस टाइम पे कितना होगा, it will be equal to P plus JQ, that is JQ only right now, JQ VAs. This is for a purely inductive load and for a purely capacitive load. Purely capacitive अगर होगा, खाली difference जो है आपकी एक ही difference आएगी, there is only one difference. phi आपका -90 है, तो जो साइन ऑफ -90 होगा वो -1 होगा, क्यों आपका माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस है, ठीक है। उस टाइम पे वी ए आर पावर पी तो इस टाइम पे भी 0 वॉट्स ही है, एंड एस इक्वल टू माइनस जे क्यू। For a purely resistive load, apparent power is equal to real power, imaginary reactive power is 0. For a purely inductive load, real power is 0. For a purely capacitive load, real power is 0. But for a purely inductive load, reactive power is Vrms into Irms. For a purely capacitive load, Q is equal to reactive power is equal to minus Vrms minus Rms. तो अब डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में क्या है कि इन दोनों में नेगेशन की डिफरेंस है। फाइन, नेगेशन की डिफरेंस मीन्स अगर आपके सिस्टम में इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो अगर एक रिएक्टिव से फॉर एग्जांपल इंडक्टर इज कंज्यूमिंग 50 VARs and the capacitor is consuming 30 VARs, तो टोटल जो रिएक्टिव पावर होगा इस टाइम पे दैट विल बी 50 minus 30, दैट विल बी 20 VARs। तो अगर अब आपके पास एक कॉम्बिनेशन होगा ऑफ इंडक्टर्स का और कैपेसिटर्स का, तो योर वी आर कैन बी रिड्यूस्ड इन द सिस्टम, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोड्स जो आपके घर में, अगेन आई विल रिपीट दिस, से फॉर एग्जांपल मोटर्स हैं या फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, ये इंडक्टिव लोड्स हैं, इनमें इंडक्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये इंडक्टेंस, तो ये पॉजिटिव वीएआर ज़्यादा खींचते हैं, फाइन। So if you want to compensate for it, what you can do is you can install capacitor banks in your system. तो capacitor banks लगाने से क्या होगा कि वो negative VAR खींचेंगे। तो by drawing negative VAR in the system, by drawing a negative reactive power into the system, they can compensate for the demands of inductors in the system, and net reactive power जो है आपके सिस्टम है, you will be able to reduce it in your system. सर टू फेज और थ्री फेज मोटर में डिफरेंस क्या है? अभी हम फेजेस पे तो आ गए नहीं, हम 3 फेज AC systems हमें पढ़ना है आगे जाके। whatever we are studying right now, it is single phase. तो मोटर्स तो मैं आपको पढ़ाने वाला वैसे भी हूँ नहीं, तो 2 फेज मोटर्स वैसे, 2 फेज मोटर कहाँ से पढ़ा आपने? सर थ्री फेज। विल बी स्टार्टिंग 3 फेज इन, ये जो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें 3 फेज सिस्टम ही उठाने, तो 3 फेज सिस्टम आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। whatever we are studying right now, it is single phase. So we have discussed today real power, reactive power, and apparent power. Apparent power is the power, it is a complex power denoted by the term S, and it is given as a complex number. It is represented by P plus JQ. Fine. It is measured in terms of VA, volt amperes. It is actually the power that your system will have to generate. जो भी आपके systems होंगे, idle power plant है या thermal power plant है, it is actually the power that your system will have to generate. It has to meet, your system has to meet for both reactive power demands as well as the real power demands.
When we have studied real power, it is actually the power that is being consumed by the system for actual energy utilization, and it's measured in terms of watts. Reactive power, हमारी केमिस्ट्री क्लास है. अभी 5 मिनट है. Reactive power जो है, it is uh, not the power that gets consumed in the system. It is only the power that is oscillating in the system, that there is an exchange of some amount of power between the source and your reactive elements because of the nature of inductor and capacitor. They charge in one half of the cycle and they discharge in another half of the cycle. So there is a continuous energy transfer between source and your reactive elements. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इंडक्टर और कैपेसिटर में? One will consume positive VAR, another will consume negative VAR for that particular half of the cycle. Next half of the cycle में again उल्टा होगा. ठीक है. So they can actually compensate for each other. अगर आपके सिस्टम में इंडक्टेंस ज़्यादा है तो आप कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने सिस्टम में, ताकि जो रिएक्टेंस है, रिएक्टिव पावर डिमांड है, यू कैन रिड्यूस दैट इन योर सिस्टम. अगर आपके सिस्टम में कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो यू कैन इंट्रोड्यूस इंडक्टेंस सो डैट जो आपके कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर डिमांड से वो इंडक्टर फुलफिल कर सके, ताकि जो नेट रिएक्टिव पावर है यू वांट टू मेक इट एज क्लोज पॉसिबल टू जीरो एज यू कैन. ठीक है. कंप्लीटली जीरो तो आप कर नहीं सकते हो, बट यू वांट टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल टू जीरो so that you actually reduce, so that you are actually able to make power factor equal to 1, that is unity. ठीक है. तो anywhere between 0.95 to 1 is a good power factor. आपका सिस्टम एक एफिशिएंट सिस्टम माना जाएगा. ठीक है. जितना पावर फैक्टर आपका कम होगा, दैट मीन्स आपके सिस्टम में रिएक्टिव पावर डिमांड ज़्यादा है रियल पावर डिमांड से. दैट इज एक्चुअली that will actually burden your power plants. That's not good for your ओवरऑल सिस्टम. आपका जैसे कि बहुत सारे सिटीज़ में जो मीटर्स लगे होते हैं, दे एक्चुअली मेजर योर पावर फैक्टर डिमांड्स ऑल्सो, तो यू आर चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो. अगर आपके सिस्टम में पावर फैक्टर ज़्यादा है, सो यू कैन यूज कैपेसिटर बैंक्स टू लोअर दैट पावर फैक्टर. अगर आपके घर में पावर फैक्टर ज़्यादा कम आ रहा है, ठीक है, तो आप कैपेसिटर बैंक्स का यूज इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जो आपका पावर फैक्टर है वो यूनिटी के करीब आ जाए, आपके जो चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे. ठीक है. So we'll be doing numericals on this, and we'll also be doing some more equations on this in tomorrow's lecture. That will be all for today.